Very good evening to all my dear students from second year, third year maybe. Dear friends, as we all know that we are now in the mid of data-centric world, and we already have realized the importance of data. The corporates, industries, businesses, research organizations, educational institutes, all of these are very data thirsty. They are desperate to create an opportunity to capture data, obviously relevant data. So, my dear friends, when the data is gaining such an importance, organizing and managing these data becomes very crucial for survival of corporates. And there comes a system which is meant for this, which is meant for managing basically, okay, the huge repository of the data, and that system is called as database management system. So I take this opportunity to welcome you all. This is Professor Sachin Deshpande, something like around 30 years of experience and dealing with this course not less than 20 years. And I love this course, okay, and talking to the young generation. So I assume that it's time for we to now, okay, get in action. What do you say? Yes, sir. And I hope I should have asked this, okay, right at the beginning. The presentation is visible to you, number one, and obviously I'm audible to you. Yes? Great. Chalo. So, very interesting course, and then especially for those aspirants, those who are just looking ahead for getting into an IT industry, this is basically one of the most fundamental course. So it carries basically, okay, like a lot of weightage. So, my dear friends, now if someone asks us, okay, what is the importance of the data? And in today's world, as we know that IT sector revolves around the data. We say that it is a treasure. Data is precious thing. And everyone now, they are basically, okay, trying their best to turn data into information. We know that data, basically, they are raw facts. I believe you people, you already have done a course on data structures, and you already have done a programming course 2 times in semester 3 and semester 2 also. So what is data? Data basically, okay, refers to an raw facts. So the name of the student becomes an data. So when we process this data, it gets converted into an information which makes some sense. So as I'm telling you, now we believe in converting a data into information and information into insight. We need to basically introspect, गिरबान के अंदर झांक के देखना है, okay, कि कहाँ है हम. Every industry is doing that, and possibly if they spend a time understand, okay, where they are and where they are supposed to be, so obviously this insight gets transformed into wisdom, as it is already predicted that, okay, 21st century is a database, is a marketplace. Database is marketplace, and these are the buzzwords and jargons. I think तुम लोग सब सुन रहे हो कि डेटा एनालिटिक्स की बात होती है, देन डेटा साइंस की बात होती है, डेटा माइनिंग की बात होती है, बिग डेटा एनालिटिक्स की बात होती है. तो ये आज ये सारे टेक्नोलॉजीज, दे आर बेसिकली, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज. So as I said, data is regarded as a new oil or new fuel, and if you don't have a data from a business perspective, then you will be loser. So we know that, okay, normally the song goes itni shakti hame dena data. So I just have transformed this into data. Okay, it's like that. So why to learn this course? As we know that the corporate world is indulged in fierce competition. The outside world is very cruel, and there is a lot of competition happening, okay, and that's the reason the decision makers, a middle and high level management people, they are starving for just getting right information at right time, for them to take right decision, employ right strategy for opening a new chapter of success. So
what is important, they should get basically, okay, they should do trend analysis, they should understand where, okay, in which direction they are moving. They also needs to understand where their competitors are, competitor ki policy kya chal rahi hai, okay, how they are basically, okay, leading ahead. So this needs capturing data, managing it, producing it in a form which allows a decision maker to take decisions, okay, at a spur of the moment, immediately. Okay, the delay is very then dangerous in that case. Okay, so that is the reason we say that, okay, this is one of the important course and it keeps your business wheel turning around always. So a core course for computer engineering aspirants. So if someone asks us what is there with you, क्या है तेरे पास, तो मेरे पास डेटा है, ये कहने से भी आजकल basically, okay, the people around will start respecting you, something like this. And believe me, okay, many of the business entities are there, they are just minting the money, they are generating the revenue only by selling the data. They capture the data from variety of sources and then they make it available wherever the aspirant wants this data. So that is the reason it carries a very important okay, weightage. That is what I was telling you. Now, my dear friends, कभी भी जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात होती है तो जनरली फॉर वी टू अंडरस्टैंड कि भाई ये क्यों आया, ये सिस्टम ऐसी क्यों जरूरत पड़ी, व्हाई द नीड अराइजेस, ये सोचना जरूरी हो जाता है। और ये सोचने के लिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि डीबीएमएस आने के पहले क्या तरीका था इंफॉर्मेशन मैनेज करने का या डेटा को रिकॉर्ड करने का, क्या तरीका था। तो वो जो एक मेथड थी, एक सिस्टम थी, उसे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता है। और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ऑब्सोलीट नहीं हुई, काल बाह्य झालेली नाहीये। ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, आज भी है, जहां उतना इम्पोर्टेंट डेटा मैनिपुलेशन की जरूरत होती नहीं है। एक बार डेटा रिकॉर्ड कर दिया तो बस हमें फेच करना है, बस रीड करना है। तो ऐसे सारे एप्लीकेशंस में शायद और भी अभी भी फाइल प्रोसेसिंग यूज किया जाता है, लेकिन whenever the data becomes crucial, the manipulation becomes very important, and producing it in a form as it is required, ये जब जरूरत आन पड़ती है तो ऑब्वियसली डीबीएमएस के बारे में सोचा जाता है। फाउंडेशन कोर्स है और फाउंडेशन है, इसके आगे वाले जो सारे ट्रैक पे आने वाले जो कोर्सेस है, बी इट डेटा माइनिंग, बी इट डेटा वेयर हाउसिंग, बी इट डेटा एनालिसिस एंड ओके, लीडिंग टुवर्ड्स साइंस ऑल्सो। ओके, थैंक यू। तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच रहा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, तो क्या है ये फाइल का मतलब क्या होता है? फाइल का मतलब इन द सिंपलेस्ट फॉर्म अ फाइल इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। हम लोग ऐसा कहते हैं कि फाइल के अंदर आपको डेटा मिलेगा, रिकॉर्ड्स मिलेंगे। ओके, और फाइल प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में डेटा फाइल्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, उसकी और एक कैरेक्टरिस्टिक फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच की ये रही कि इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम every application is regarded as an independent application. In fact, ये जो कैरेक्टरिस्टिक रही, तो ये कैरेक्टरिस्टिक उस दौर में ठीक ही थी, लेकिन बाद में ये रियलाइज हुआ कि यार ये इसके वजह से ही दिक्कत आ रही है। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज समथिंग लाइक दिस. So every application is regarded as an independent application, regarded as independent of other applications, even if it is belonging to the same organization or business entity. अभी सवाल रहा इसका मतलब क्या है? तो normally I prefer basically, okay, just taking giving the illustration, एक example के तौर पे हम लोग बात करेंगे एक educational institute के बारे में, क्योंकि हमें सब पता है typical क्या क्या होता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक एडमिन सेक्शन होता है, जिसमें आप पाओगे कि एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, उसको एडमिन सेक्शन भी कह सकते हैं हम लोग। सो आई विल प्रिफर टू कॉल दिस एज एन एडमिन एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ academic application. So they are supposed to look after basically, okay, registering students with all the regulatory bodies, जैसा director of technical education है, universities है, then correspondence with the universities and scholarships and this and that. So
accounts department hota hai, they are supposed to look after all finance related aspects, okay, and we have an examination section and departments and blah blah. There are obviously many departments. So now, what is the meaning of an every application is regarded as an independent application? So let us assume that it's I'm just taking you basically, okay, something like 5 decades back, because abhi agar main कहूं कि educational institute में सिस्टम सॉफ्टवेयर है ही नहीं है और कंप्यूटर यूज ही नहीं किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली ओके यू विल बी ऑब्वियसली just rejecting this claim. So 50 years back the scenario used to be कि computers का presence just शुरू हो गया था आना. तब ऐसा सोचो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया कि चलो एक रजिस्ट्रार ऑफिस है, एडमिन सेक्शन है, उसका ऑटोमेशन करते हैं. ऑटोमेशन करते का मतलब यह है कि जो मैनुअल प्रोसेसेस है उसको स्लाइटली कन्वर्ट करते हैं आ जाएगी, third party will get in, and this may be outsourced or this responsibility may belongs to, may be handed over to some people, a group of people who is supposed to look after this automation. So let us assume that this becomes a team and they are supposed to develop a software system. Now what they will do, they will obviously okay talk to the registrar's office people, understand कि अभी का मैनुअल सिस्टम कैसा है, फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या डेटा कैप्चर करना पड़ेगा, so on and so forth. I will not take you inside the details right now, okay, gradually we'll be touching obviously all these details. तो माय डियर फ्रेंड्स कि ऐसा सोचो कि उन्होंने तय किया कि यार ये सब एडमिन सेक्शन जो उनको एम्प्लॉय का भी डेटा लगता है, स्टूडेंट डेटा लगता है, क्या क्या कोर्सेस ऑफर हो रही है उनका डेटा, रजिस्ट्रेशन का डेटा लगता है. तो व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल डिसाइड कि ये एम्प्लॉय डेटा एक फाइल में रखते हैं, एक से ज्यादा फाइल्स में रखते हैं. तो दे विल डिसाइड कि ये एम्प्लॉय डेटा इतने फाइल्स में डालेंगे और उसका जो रिकॉर्ड्स का स्ट्रक्चर रहेगा वो इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा. मींस पहले एम्प्लॉय का आईडी आएगा, फिर बाद में नाम आएगा और कुछ आएगा, एक स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाएगा, used to be other and then they will start writing down the code. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है एंड देन फाइनली ये सॉफ्टवेयर जब उनको लगता है कि हो गया तैयार, तो दे विल डू द रिगोरस टेस्टिंग ऑफ दिस ऑन द डेटा एंड देन दे विल डिप्लॉय. और डिप्लॉय करने के बाद में इनका ट्रेनिंग दिया जाएगा रजिस्टर ऑफिस के जो बंदे कि भाई तुम लोग ऐसा ऐसा यूज करो, ये ऐसा इंटरफेस रहेगा, इसको क्लिक करना है, इसको एंटर करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये करने के बाद में फिर रजिस्टर ऑफिस विल स्टार्ट एंजॉयिंग द बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन कि अभी जो मैनुअल वर्क है, ओके, गेटिंग रीड ऑफ दैट मैनुअल प्रोसेसेस, ओके, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था, अभी ये सब काम ऑटोमेटिकली हो रहा है. समझा आपको यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. तो अभी ऐसा सोचो कि ये जो इंस्टीट्यूट है, द मैनेजमेंट पीपल दे गेट इम्प्रेस, अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अभी और एक एक डिपार्टमेंट हम लोग ऑटोमेट करना शुरू करेंगे. नाउ कम्स दिस इंडिपेंडेंट नेचर. अभी अगेन इफ दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर एन ऑटोमेशन ऑफ एन accounting department and finance department, accounts department, the same process again. Some group of people, team members, maybe an outside party or in-house a team will be made responsible for development of a software. They will again undergo the same process of talking to account people, understanding their requirement, deciding upon कि कितना कितना फाइल्स लगेगा और ये फाइल के अंदर डेटा को कैसा रखेंगे हम लोग, और ये सब करने के बाद में एक अकाउंट एप्लीकेशन जब डेवलप करने की बात चलेगी. नाउ लिसन केयरफुली. जब ये अकाउंट्स का एप्लीकेशन बन रहा है तो ये अकाउंट वाले बंदे भी शायद उनको लगेगा एम्प्लॉय डेटा, उनको लगेगा स्टूडेंट डेटा, उनको और कुछ एडिशनल डेटा भी लगेगा. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि दे मे से दैट यार यस दिस employee data is already there lying in the files belonging to registrar office, but it may happen, there used to be possibility, okay, ki the way the data is, employee data is organized for registrar office, the organization required by accounts department may be something different. Something may be there which is required to be made available in employee data file of registrar, which may not be there in required for an accounts and vice versa.
तो normally the tendency used to be कि चलो यार छोड़ो वो उधर रहने दो, अपन अपना एक अलग से फाइल बनाएंगे और फिर same data is required to be punched, recorded. So एप्लीकेशन जो है, दो अलग अलग एप्लीकेशन है, उसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए बने हैं सॉरी, लेकिन दे आर रिगार्डेड एज इंडिपेंडेंट कि इसका फाइल्स अलग, इसका फाइल्स अलग. तो ये इंडिपेंडेंट नेचर जो है कि एवरी एप्लीकेशन इज रिगार्डेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, ये समझा क्या? Yes, sir. Yes. और मूवमेंट अगर आप ये कह रहे हो कि ये समझा, तो आप इमीडिएटली आपने नोटिस किया होगा यार फिर इसमें तो डुप्लीकेशन के चांसेस है क्या? चांसेस डुप्लीकेशन के, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा. Yes, sir. Yes, sir. May not be exactly the entire data, but then there exists a very possibility of the data getting duplicated, and this in fact the very characteristic of a file processing approach has started reflecting in terms of some potential drawbacks, disadvantages. I prefer to call this as potential drawbacks. The probability of these drawbacks appearing used to be very high, so I call it as a potential drawbacks. And what are those potential drawbacks? So पहला तो आपने देख ही लिया कि data redundancy है, कि if the same piece of information is replicated in different files, so obviously okay, this will lead to the redundancy. And if there is a redundancy, so obviously it will lead to an wastage of memory. And if you are of the opinion that okay, we are not at all bothered about कि memory waste हो रही है तो होने दो, लेकिन वो problem ही नहीं है. Memory wastage is a very small problem. तो उसका बाकी problems basically okay comes in form of data inconsistency. तो एक तो replication आ रहा है और memory भी waste हो रही है, लेकिन उसका serious consequences अगर मैं बात करूं कि because of this data redundancy there exists a possibility of data inconsistency. Now what is the meaning of this data inconsistency? If the same piece of data recorded at different files belonging to the same organization is not same, if it doesn't agrees with each other, no longer agree, so that will lead to a data inconsistency. It means that in the previous case, the diagram what I was showing you, if the registrar office who is supposed to keep a track of an employee, those who are there working for the organization, and if the employee leaves, if the employee basically okay submits the resignation, and the resignation typically is handled by an admin section, so on from the first of the month the employee is no longer with the organization. But then let us assume that these applications are independent, so conveying the message across the department still happens to be and used to be a manual process. Are you getting this? Yes, sir. And if there is a manual component involved, there exists a possibility of okay, like a tendency of let us do it to kal karte hain, chal chhod, let us do it tomorrow. Now if it happens and if this message is not conveyed to accounts department, the possible consequences is that the accounts department may still believe that the person is there with the organization and will draw the salary, and which will lead to obviously okay the financial crisis. Yes or no? Yes, sir. So why this is happening? Because the employee information which is there with the file of admin section and file with account section is no longer agreeing with each other. It's not matching, rather. Okay, agreeing, I don't know, is not an appropriate term. It doesn't matches with each other. And then same thing happens if the employee gets promotion or demotion, whatever, if gets promotion and gets promoted and the salary hike goes, and this is not notified to accounts department, so the accounts department may basically okay still believe that it is the same old salary the employee is supposed to draw,
and then will lead to an consequences. So what I mean is, I assume that you understand what is data inconsistency. Yes, sir. So the other drawback, normally what we talk, and this is a very common question, okay, explain the disadvantages or potential drawbacks of the file processing system. Okay. The next drawback is difficulty in accessing a data. Now you may be wondering if the system is automated and the data is there in the files. Your programs are capable of fetching the data from file. Where comes this difficulty component? So accessing data is not convenient and efficient in file processing. The question is why? The reason is the data which is required by the decision makers or higher management, middle management people, that kind of an query, see, whenever you are developing an application, you need to anticipate, okay, कि क्या क्या सपोर्ट मेरे सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, कि मेरे सॉफ्टवेयर को किस तरह के क्वेरीज आएंगे, what kind of queries my software, my program, my application is supposed to handle, क्या पूछा जाएगा, क्या ढूंढने के लिए कहा जाएगा. So कभी भी जो टीम होती है ना, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाली जो टीम होती है, they are supposed to will you please read out someone? Anticipate frequent queries. जो एक कॉमन फ्रीक्वेंट क्वेरीज है, वो रजिस्टर एडमिन सेक्शन वाला बोल रहा है, यार मुझे ऐसा पूछा जाता है, प्रिंसिपल पूछता है कि देख कभी कितने स्टूडेंट का फीस जमा हुआ है, ये सॉरी अकाउंट्स वालों को, या एडमिन वालों को पूछता है कि देख कितने स्टूडेंट का पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, एंड सो फोर्थ. सो फ्रीक्वेंटली appearing queries, and frequent queries are easy to anticipate because okay, that always comes out of an experience. But then there may be, is it possible to anticipate all possible queries? What do you say? जो भी फ्यूचर में क्वेरी आने वाली है, हम लोग आज बेट लगा सकते हैं कि जब ये मैंने पहले ही सोच लिया था, ऐसा हो सकता है क्या? No, sir. So there may be certain queries which may not be anticipated during the development of the application. और उस तरह की अगर क्वेरी आती है और फिर तुम्हारा प्रोग्राम सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको, तो फिर आ गए ना कि हायर जो मैनेजमेंट पीपल है वो बोलते हैं मुझे तो अभी जवाब चाहिए, और ये बंदा बोल रहा है यार अभी तो मेरा प्रोग्राम चल नहीं रहा है, इस पे ढूंढ नहीं पा रहा है, तो चलो मैं अभी बैठूं और मैन्युअली फाइंड आउट करूं. तो मैन्युअली जब वापस जाएंगे तो इट विल डिफीट द होल पर्पस ऑफ गोइंग फॉर एन ऑटोमेशन. Now, for example, इसका मतलब क्या है कि let us assume that कि we are talking about an employee data. Okay, and typically speaking, given an employee number, finding out the other details, find other details of employee. एम्प्लॉय नंबर प्रोवाइड किया है, 1 2 3 4 एम्प्लॉय नंबर, उसके बाकी सारे डिटेल्स बताइए. ये एकदम कॉमन क्वेरी है, इजीली के एंटिसिपेट हो सकती है. लेकिन ऐसा सोचो कि एम्प्लॉय का एड्रेस ढूंढ के निकालो, ये भी एक एंटिसिपेट की गई क्वेरी है. लेकिन ये एड्रेस में ऐसा अगर सोचते हैं हम लोग, एक एड्रेस है और एड्रेस में कुछ ऐसा आ रहा है कि किसी के एड्रेस में अंधेरी वेस्ट है मुंबई, और किसी के एड्रेस में ओके लेट अस अज्यूम दैट मलाड है ईस्ट है मुंबई. तो अगर कोई पूछता है और ऐसी क्वेरी आती है कि आई वांट ऑल द डिटेल्स,
of those employees, those who are okay staying in western suburb. तो ऐसी क्वेरी अगर एंटीसिपेट हुई नहीं थी और एप्लीकेशन में उसका सपोर्ट ही नहीं है, तो देन ये दिक्कत आ गई. आर यू गेटिंग नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली व्हाट वी मीन बाय डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग द डेटा? Yes, sir. तो डेटा है, लेकिन ये हमारा डेवलपमेंट जब हुआ था तब एंटीसिपेट नहीं किया गया था, तो ये दिक्कत है. तो इसलिए ये दिक्कत आती है इसमें फाइल प्रोसेसिंग. तो इसका हल क्या है कि एक तो मैन्युअली कर, नहीं तो फिर तेरा सॉफ्टवेयर को वापस थोड़ा सा चेंज कर और एक फंक्शनैलिटी डाल दे सर्चिंग वाली. लेकिन वो इतने जल्दी होने वाला काम नहीं है, कॉस्टली अफेयर होता है. Updating the existing software is a costlier affair. So they used to face this sometimes, not always, but then they have what we can say, face the music of this, and that is the reason I am calling it as a potential drawback. The probability used to be quite high. Then limited data sharing, जिसको I will prefer to call it as a data isolation. और ये ऑलरेडी हमने देख लिया है कि डेटा आइसोलेशन का मतलब डेटा तो है, लेकिन फ्रॉम न्यू application perspective, this is always expressed from new application perspective. इसका मतलब है कि अगर कुछ ऑलरेडी एप्लीकेशंस बने हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक नया एप्लीकेशन डेवलप करने की बात हो रही है, और वो नए एप्लीकेशन को जो डेटा लगता है वो ऑलरेडी फाइल्स में पड़ा है, किसी और एप्लीकेशन वाले जो फाइल्स है उनके साथ पड़ा है, जैसा मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था. लेकिन इट इज नॉट इन अ फॉर्म एंड फॉर्मेट विच इज डिमांडेड बाय दिस न्यू एप्लीकेशन. तो मुझे बताइए कि कोई पर्पस सॉल्व हो रहा है क्या? फ्रेंड्स, व्हाट इज योर ओपिनियन? एम्प्लॉय डेटा तो पड़ा है एडमिन सेक्शन के साथ, लेकिन अकाउंट डिपार्टमेंट को जो एम्प्लॉय डेटा जिस फॉर्म में एंड फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट में नहीं है. तो डेटा तो है लेकिन appears to be isolated. Got the point? Yes, sir. So that is the reason they and then मैंने कहा था कि फिर इससे अच्छा है कि वो बंदे क्या बोलेंगे, चलो अपना अपना फाइल बनाते हैं. And this in turn basically okay and leads to an redundancy and it becomes an vicious cycle. So this is again a drawback, but then always remember that this drawback we need to speak कि जब नया एप्लीकेशन डेवलप करने की बात चलेगी और वो एप्लीकेशन को जो डेटा लगता है वो ऑलरेडी है भाई किसी और फाइल्स में, लेकिन उस फॉर्मेट में नहीं है जिस फॉर्मेट में अभी के एप्लीकेशन के लिए लगता है. तो इसलिए वो कुछ काम का नहीं है, तो appears to be isolated. Got the point? Yes, sir. फिर there is something called as an integrity problem. So I'm putting this downward arrow, so it's a drawback. Upward arrow is benefit. Integrity problem. Now integrity problem का मतलब है degree of correctness. अच्छा, degree of correctness का मतलब अच्छा, what is correct and what is wrong from information perspective obviously may keep on changing. Okay, I take it in the right spirit. What exactly I mean is that कि जो भी डेटा रिकॉर्ड किया जाता है तो उसका ना कुछ एक डोमेन होता है, और अभी के लिए डोमेन का मतलब आप ऐसा सोचो कि सेट ऑफ क्या लिखा मैंने? Set of permissible values. सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यूज का मतलब कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक एम्प्लॉय का सैलरी स्ट्रक्चर ऑलरेडी तय हो चुका है, ऐसा रैंडमली सैलरी होती है या स्ट्रक्चर होता है? व्हाट इज योर ओपिनियन, एटलीस्ट फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड government organizations? Is it the salary is decided, maybe it is happening in private depending upon the skill set and capabilities,
लेकिन गवर्नमेंट में तो ढांचा एकदम फिक्स होता है, राइट, सैलरीज का। यस सर। तो किसी जो जो एक बंदा है, जो भी उसके डिपेंडिंग अपॉन ओके व्हाट इज द पोजीशन एंड पोस्ट ऑफ दिस पर्सन, उसकी सैलरी में भी मिनिमल रहेगी, और किसी की सैलरी जो मे बी एन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसकी सैलरी हाईएस्ट रहेगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इज सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यूज, रेंज, कि यहां से लेकर यहां तक परमिसिबल रेंज है। तो जो भी वैल्यू असाइन करनी है वो वैल्यू इस ये दायरे के अंदर ही होनी चाहिए, इसके बाहर नहीं होनी चाहिए। व्हाट द पॉइंट? लेट अस कॉल दिस एज एन रेंज, बट डोमेन इज एन एप्रोप्रिएट टर्म हम लोग यूज करते हैं यहाँ। ये समझा आपको? और एक एग्जांपल लेते हैं। एंड सेमिस्टर एग्जाम जो होती है, फॉर एग्जांपल आपने लास्ट टाइम डेटा स्ट्रक्चर ये कोर्स किया, तो उस एंड सेमिस्टर एग्जाम जो है, तो उसका लोवेस्ट मार्क्स क्या हो सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में? 0। एंड हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 80. 80। अभी जब डेटा एंट्री होती है, स्टूडेंट ने उसका एग्जाम हो गया, फिर प्रोफेसर्स ने उसको पेपर इवैल्यूएट भी किया, मार्क्स दे दिए, अभी फाइनली डेटा एंट्री होती है। और जब डेटा एंट्री होती है, तो जब जो बंदा डेटा एंट्री कर रहा है, तो ऑब्वियसली ओके, if the person enters a value which is less than 0 or greater than 80, it should not be accepted by the system, right? Yes or no? Yes sir. Now if I ask, let just think in its minimal form, हम लोग एक बड़े बड़े एप्लीकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, इसको अगर इंपोज करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आपको कौन सा स्टेटमेंट याद आ रहा है? आपने जावा भी किया, लेट अस अज्यूम दैट आपको एक एक्सेप्शन थ्रो करना है, या एक मैसेज देना है कि भाई ये इनकरेक्ट है, व्हाट यू आर एंटरिंग इज नॉट करेक्ट, इज इनवैलिड। Catch. हाँ, Throw catch. throw and catch, rightly said, when it comes to in Java. But then is it not will be using something like an if in the simplest manner? If Yes. statement will lay down the condition, the validity, and will say if it is okay, if it is fitting inside, will say go ahead, else will say okay, it is not acceptable, something like this. Yes, sir. Now what I'm trying to convince you is that कि ये जो रेंज है ना, वो जरूरी नहीं कि ऑलवेज एक बार तय हो गई तो 0 से 80 रहेगी। एक टाइम ऐसा था कि जब वो 0 से 100 हुआ करती थी, ओके। और एक टाइम कुछ और एग्जाम्स की बात चलेगी, तो आपको ये भी दिखाई देगा कि नेगेटिव मार्किंग स्कीम भी होती है, गेट एग्जाम वगैरह की बात होती है, तो नेगेटिव मार्किंग स्कीम भी है। तो ये जो रेंज है ना, वो रेंज जो है, जो मिनिमम है, जो मैक्सिमम है, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, ये जरूरी नहीं कि सेम रहेगी। अच्छा, ये अगर चेंज होती है, तो ये चेंज होती है, तो इज इट नॉट यू नीड टू गो इनसाइड एन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डू दिस चेंज हियर? Yes, sir. तो changing your code when the integrity constraints, इसको integrity constraints, ये जो लिमिट्स की बात कर रहा हूं ना, इसको हम लोग इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट्स? imposing restrictions in its simplest form. Got the point? Imposing limits, imposing restriction is nothing but a constraint, limitations. Yes or no? Yes. तो ये जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है ना, ये हमने तो प्रोग्राम के अंदर ही लिख दिया, ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है। ये अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन और इक्वल टू 80 है, तो चंगे आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट प्रोग्राम के अंदर एम्बेड किए जा रहे हैं, और कल चल के अगर ये
range change होती है तो I need to go inside and code and change the code, which is not good. And that is the reason. And if we miss reflecting this change, then it will lead to the problem. Are you getting this? Yes, sir. And then your application will start accepting something which should be declared as invalid, or maybe it will declare reject something which is acceptable and which is very much valid. So ऐसे सारे problems आया करते थे, because अगर कोड में जाके चेंज करना है और नहीं हुआ तो ये सारे प्रॉब्लम्स को बेसिकली ओके इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स कहा जाता है. और इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स आ रहे, इसका मतलब आप डिग्री ऑफ करेक्टनेस इंश्योर नहीं कर रहे. If there is an integrity problem, it means that the degree of correctness is lost. And in any case, they say that you should not compromise on the degree of correctness when it comes to a piece of data. Otherwise, misleading data is very dangerous for organization, from business perspective, from everyone's perspective. Misleading data is dangerous. So इसलिए ये integrity problems आने के chances हुआ करते थे, and they have labeled this as an integrity problem. I believe till this point, are you okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then comes an automaticity problem. Acha, automaticity ka requirement, I will talk about an automaticity also. The automaticity requirement जो होती है ना, is very simple. एक तो पूरा नहीं तो बिल्कुल नहीं. We call this as especially जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी एक्शन, जो डेटाबेस है, जो डेटा पड़ा है, जो रिपोजिटरी है, फाइल्स में है शायद, उस पे जो भी एक्शन हो रहा है उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? Transaction. तो एक बेसिक रूल ऐसा है कि आधा अधूरा ट्रांजैक्शन काम का नहीं है. अगर फाइनल इफेक्ट की बात चलेगी तो हम लोग कहेंगे कि इफेक्ट ऐसा होना चाहिए कि एक तो पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये वाला इफेक्ट, और अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे ऐसा इफेक्ट चाहिए कि ट्रांजैक्शन अभी तक हुआ ही नहीं है. तो दिस इज कॉल्ड एज एन ऑल और नन काइंड ऑफ एन रिक्वायरमेंट. गॉट द पॉइंट? Yes, sir. और ये एक वेरी कॉमन एग्जांपल which normally is given in this respect, very common example. Okay, you might have come across this, or eventually maybe coming across this. A common example is कि एक आप ट्रांजैक्शन कौन सा भी पकड़ो, लेकिन हम लोग बैंक के बारे में बात करते हैं. एक अकाउंट है A और एक अकाउंट है B. ए में कुछ 10 लाख पड़ा है रुपया, और बी में लेट अस अज्यूम दैट 5 लाख रुपए पड़ा है. और ये एक बैंक के थ्रू हम लोग फंड ट्रांसफर की बात कर रहे हैं. तो फंड ट्रांसफर एक ट्रांजैक्शन हुआ कि मुझे फंड ट्रांसफर करना है मेरे अकाउंट से मेरे दोस्त के अकाउंट में, मुझे कुछ पैसा डालना है, तो इसको फंड ट्रांसफर कहेंगे. तो लॉजिकली स्पीकिंग अगर इसको देखेंगे ना, लॉजिकली कि भाई पहले तो मेरे अकाउंट में कितना पैसा है वो चेक करूं, तो आई विल रीड ए का वैल्यू. देन ए का वैल्यू मिलने के बाद में अगर मुझे 1 लाख रुपए ट्रांसफर करना है, तो आई विल राइट डाउन ऑब्वियसली ए इज इक्वल टू ए माइनस 1 लाख, एल स्टैंड फॉर लाख, ऐसा सोचो. एंड देन दिस चेंज्ड वैल्यू 9 लाख हो गया ना, 10 लाख में से एक निकल गया तो 9, तो ये इसको वापस फाइल्स में रिकॉर्ड कर दूं. तो अभी मेरा बैलेंस 10 लाख नहीं रहेगा, 9 लाख हो जाएगा. फिर बाद में जिसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है उसका भी अकाउंट क्या है स्टेटस देखूं, उसको इंक्रीज करूं 1 से, सो 1L, एंड इसको वापस लिख दूं. गॉट द पॉइंट? So it is basically an subtraction and addition. Debit and credit. Debit from one account and credit into another account. ये समझा? Yes, sir.
लॉजिकली लो इसको, अभी वो आर ए का मतलब रीड है एंड डब्ल्यू का मतलब राइट, ये लॉजिकल है। अभी मुझे बताओ कि ये ट्रांजैक्शन फंड ट्रांसफर अभी किया ही नहीं है, अभी तक किया ही नहीं है, तो क्या रहेगा स्टेटस बताओ ए और बी का? 10 and 5. अच्छा, अगर हो गया सक्सेसफुल तो क्या है? 9 and 6. मेरा काम हो गया, थैंक यू। टोटल कितना है? 15. 15। तो फंड ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट है कि टोटल भाई करने के पहले और बाद में 15 ही रहनी चाहिए ना। तो ये ऑल और नन के वजह से ये पॉसिबल है, तो हुआ नहीं तो भी 15 है, और हो गया सक्सेसफुल तो भी 15 है। लेकिन जब ये हो रहा है तो एवरी सिस्टम इज बाउंड टू फेल। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पूरे दुनिया में जो फुल प्रूफ सिस्टम कह सकते हैं, या वो फेल्यूर प्रूफ है कि फेल्यूर होना ही नहीं है, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं। कभी ना कभी किसी सबको फेल ही होना है। तो ऐसा सोचो कि ये जब एग्जीक्यूट हो रहा है, यहां कुछ गड़बड़ हो जाती है, यहाँ लेट अस अज्यूम दैट, ओके, यहाँ, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं लॉजिकली बताओ। बाद में इसको डिटेल में हमें डिस्कस करना है लॉजिकली, इसके कॉन्सिक्वेंस। डब्ल्यू ए के बाद में फेल हो गया सिस्टम, एग्जीक्यूशन शुरू था और इसके बाद में गड़बड़ आ गई, व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी, टेल मी। सर वो फंड बैंक में फ्रीज हो जाएगा, हाँ, वो ए से डिडक्ट करके बैंक में फ्रीज हो सकता है फंड। बैंक में फ्रीज हो जाएगा मींस, लेकिन वो कस्टमर पर्सपेक्टिव से डिडक्ट हो जाएगा। तो ए का तो 1 लाख कट गया, उसके अकाउंट में तो 9 लाख बच गया अभी, और वो बी को पूछ रहा है, अरे आ गया ना रे भाई तेरे पास, वो बोल रहा है यार कहाँ आया, बस तूने तो सिर्फ कह दिया और भेजा ही नहीं है अभी तक। दिस काइंड ऑफ एन, just I'm giving one illustration, take it in the right spirit. This is likely to happen because it is not all or none, it is in between, so in between is not allowed. And this automaticity problem used to be there because there is no special component provided in this traditional file processing system which will keep a track of what activities are happening, and if the activities are happening, are they completed to its entirety and totality or it is halfway through, then let us okay take it back. ये रोल बैक, उसको हम लोग रोल बैक कहते हैं, क्या कहते हैं? सो रोल बैक प्रोविजन, अंडू ऑपरेशन का प्रोविजन यहाँ होता नहीं था, इसलिए ये ऑटोमेसिटी प्रॉब्लम्स यूज्ड टू बी देयर एंड दे हैव लेबल्ड दिस, regarded this as an automaticity problem. Got the point? Yes sir. And I'll tell you ki in general logically how DBMS addresses all these issues. I'm coming on that issues, on that point also. So what is rollback? Rollback is roll a carpet and roll it back to its original state. So rollback in fact is an undo operation. Undo. Okay, sir. Undo का मतलब है आधा अधूरा कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, 10 का 9 लाख हुआ है, तो अंडू करने से क्या हो जाएगा? नौ का 10 हो जाएगा। हाँ, 9 का जो चेंज हुआ है उसको अंडू करना है। तो ये प्रोविजन नहीं था फाइल प्रोसेसिंग में, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज। अच्छा, कॉन्करेंट एक्सेस का मतलब है कि एक साथ एक से ज्यादा एक्टिविटीज को अलाउ करना मींस कॉन्करेंसी होती है, और आपने कॉन्करेंसी जरूर देखी है इनफैक्ट, ओके। I'm just asking you, if you have an answer I will appreciate, otherwise मैं बताऊंगा जरूर। थ्रेड क्या होता है बताइए जावा में? प्रोग्राम का एक सिंगल यूनिट। फैंटास्टिक, एक स्मॉलर यूनिट। अच्छा, मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या है? प्रोग्राम को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। हाँ, और उसका नहीं बेनिफिट क्यों किया जा रहा है मल्टी थ्रेडिंग? वो टास्क इजीली परफॉर्म करने के लिए। परफेक्ट। सो बेसिकली द पर्पस हैपेंस टू बी टास्क इजीली परफॉर्म, वो बरोबर ही है,
लेकिन उसमें एक ही इंटेंशन होता है कि मल्टी टास्किंग। ओके, तो एक साथ एक से ज्यादा थ्रेड्स एग्जीक्यूट करवाने का is nothing but a concurrent environment, means allowing more than one threads basically, okay, to remain active kind of scenario. तो ये concurrent access is desirable, क्योंकि concurrent access के फायदे होते हैं। if we talk about concurrent execution, कि एक से ज्यादा transactions if the system is capable of handling, तो उसका ऑब्वियस बेनिफिट क्या है कि नंबर 1 कॉन्करेंट एग्जीक्यूशंस के बेनिफिट मैं बता रहा हूं। एक तो परफॉर्मेंस एनहांस होता है, और दूसरा रिसोर्स का यूटिलाइजेशन भी बढ़ता है। और इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं ऐसा कहूं, लेट अस अज्यूम दैट, प्लीज लिसन केयरफुली, कि एक अच्छा प्रोग्राम क्या है बताइए, एक बेसिक डेफिनेशन शायद स्कूल डेज में भी पढ़ा। व्हाट इज प्रोग्राम? Set of instructions. Fantastic. Program is nothing but set of instructions. Okay. Now something what I'm right now telling you, you may not be aware because you will be doing a course on computer organization in this semester, I believe. Yes? Yeah, you already have done. No, sir, we have not. हाँ, so ये जो instructions होते हैं ना, कि एक नजरिया ऐसा है कि instruction को हम लोग ऐसा classify करते हैं। इंस्ट्रक्शंस है, क्या लिखा मैंने? सीपीयू बाउंड एंड IC bound. आईओ बाउंड है, IO. इनपुट आउटपुट। तो हाँ, तो इसका मतलब यह है कि सीपीयू बाउंड इंस्ट्रक्शन जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस होते हैं, उन्हें सीपीयू बाउंड इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। एंड दिस सीपीयू बाउंड इंस्ट्रक्शन नीड्स प्रोसेसर सीपीयू processor ka attention, means they are supposed to what we can say, the processor is supposed to give an action and do the processing. Are you getting this? Yes, sir. तो इसको हम लोग सीपीयू कहेंगे। तो मेन जो प्रोसेसर है, आई कैन कॉल दिस एज एन मेन प्रोसेसर। सीपीयू बाउंड इंस्ट्रक्शन डिजर्व्स रिक्वायर सीपीयू अटेंशन। आईओ, एक आईओ प्रोसेसर भी होता है, उसका मेन काम है कि टू लुक आफ्टर आईओ रिलेटेड एक्टिविटीज। अभी अच्छा मुझे बताओ कि रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन, इज इट नॉट सेंसिबली अपीयर्स टू बी एन आईओ काइंड ऑफ एन एक्टिविटी? यस और नो? No, sir. हाँ, तो ये इसको इफेक्ट देने का काम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन आईओ प्रोसेसर। तो क्या होता है कि ये दो प्रोसेसर जनरली सिस्टम में अगर है, और आजकल तो ऑक्टा प्रोसेसर एंड ये तो नॉर्मल चीज है, तो मल्टीपल प्रोसेसर्स है हर एक सिस्टम में। इवन इन योर स्मार्टफोन you will find there are okay lot many such processors are available, right? So what I'm trying to tell you is that कि अगर concurrent execution नहीं है, serial है, serial execution और concurrent execution, तो अभी सीरियल एग्जीक्यूशन का अगर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूं, तो एक टाइम स्केल अगर है, ऐसा टाइम जा रहा है, लेट अस अज्यूम दैट ये टाइम है, तो इसका मतलब क्या है कि एक प्रोग्राम आ गया,
वो खत्म होने के बाद में बारी आएगी दूसरे प्रोग्राम की, एक के बाद में एक सीरियल एक के बाद में एक सीरियल। गॉट द पॉइंट? उसके बाद में नेक्स्ट कार्यक्रम शुरू, प्रोग्राम 3 लाइक दिस। ये सुनो, Yes, sir. तो मुझे बताओ कि ये जो प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो जब एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के बारे में अगर आप सोचोगे तो इंस्ट्रक्शन एक तो सीपीयू बाउंड हो सकता है या तो IO bound. आईओ बाउंड। अच्छा मुझे बताओ कि सीपीयू बाउंड अगर इंस्ट्रक्शन है तो कौन सा कंपोनेंट रोल प्ले कर रहा है वहां? विच रिसोर्स इज गेटिंग यूटिलाइज्ड? CPU. CPU. And IO processor is sitting idle? No, it's working. No. If the current instruction, you just check from instruction perspective. Okay, yeah. If the current instruction is CPU bound, so it means that that instruction will make your main processor busy, but then doesn't requires any attention from IO processor. Got the point? Yeah, sir. So IO processor is sitting idle, and when IO instruction comes, so IO processor is busy and CPU is sitting idle. So there is an idleness, possibility of idleness. बरोबर है? Yes or no? लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई मैं, तो आपको समझ में आ रहा है तो बताइए प्लीज। Sir, can you repeat? यस? Sir, can you go over it again? नहीं, व्हाट आई एम टेलिंग यू कि वन प्रोग्राम एट ए टाइम इज अ सीरियल एग्जीक्यूशन। एक बार सिर्फ एक ही प्रोग्राम, सिस्टम के अंदर एक ही प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन मोड में रहेगा। ओके, सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग नहीं है बिल्कुल। तो उसमें प्रोग्राम के अंदर एक इंस्ट्रक्शन है, तो एक इंस्ट्रक्शन जैसा हमने क्लासिफिकेशन किया है, तो इंस्ट्रक्शन एक तो सीपीयू बाउंड रहेगा या तो आईओ बाउंड रहेगा। Yes. अगर वो सीपीयू बाउंड है तो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, आईओ प्रोसेसर अपना खड़ा है हाथ पकड़ के। इज एनोलॉजी, दिस इज नॉट वर्किंग। हाँ, और अगर वो आईओ बाउंड इंस्ट्रक्शन है तो आईओ प्रोसेसर इज इन एक्शन एंड सीपीयू मेन प्रोसेसर इज वेटिंग। ओके, अभी थोड़ा आराम करता हूँ। तो देयर इज एन आइडलनेस, और एक खाली दिमाग अच्छा होता नहीं है, तो वैसा ही वो रिसोर्सेज को खाली रखना इज अंडर यूटिलाइजेशन। ये समझा क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अभी कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि एक इंस्टेंस पे एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को अलाउ किया जाता है टू बी एक्टिव। सो देयर इज एन ओवरलैप। थोड़ा सा ओवरलैप दिखाई दे रहा है क्या आपको? समथिंग लाइक दिस। Yes, sir. तो उसमें क्या होगा, एक बेनिफिट क्या होता है कि यहां देखो जो ओवरलैपिंग एरिया है ना, ये वाला एरिया, is it not there exists a chance, I'm just talking about a chance, a probability, is it not there exists a chance in this overlapped region कि maybe कि प्रोग्राम 1 का इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स अटेंशन ऑफ सीपीयू, तब प्रोग्राम 2 का इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स एन अटेंशन ऑफ आईओ प्रोसेसर। Yes. So what will happen, tell me? Both of them will work. Both of them, they will be okay in an action mode, right? So it will improve resource utilization and it will also reduce the total time required to execute multiple programs together as compared to the serial execution. ये समझा क्या आपको? Yes, sir. तो यही मैं बता रहा था, ये जस्ट ओके कि ये कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन के बेनिफिट्स है। एक परफॉर्मेंस एनहांसमेंट होता है और रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी अच्छा खासा हो जाता है। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. फिर सवाल रहा कि दिक्कतें क्या है इसमें, व्हाट इज अ ट्रबल देन इन दिस केस? तो ट्रबल इज व्हाट आई बिलीव यू पीपल माइट हैव गॉन थ्रू थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। सुना है आपने? Yes, sir. हाँ, क्यों चाहिए? why threads needs to be synchronized? और यार चलो वो एक सिंपल एग्जांपल ऐसा है कि भाई जब तक एक थ्रेड है, दूसरा थ्रेड है, ये ए को
एक्सेस करना चाहता है, ये बी को एक्सेस करना चाहता है, तो they can do this access simultaneously in a concurrent manner. There is no trouble. Are you convinced with this? Yes, sir. This is one scenario. The other scenario is if we have two threads and they are basically trying to gain an access to the same resource, say a कुछ भी हो सकता है, फाइल हो सकती है, टेबल हो सकता है, या इट मे बी सम डिवाइस ड्राइवर, व्हाटएवर. ए है, ए नाम का एक रिसोर्स है, दोनों को भी ए को ही एक्सेस करना है, लेकिन दोनों को रीड करना है, सिर्फ रीड करना है, उसमें चेंजेस कुछ आने के चांस नहीं. तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर. तो अगर दोनों को सिर्फ रीड ही करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. रीड ओनली, दोनों भी रीड ओनली. सो तीसरा सिनेरियो ऐसा है कि दोनों को सेम एक्सेस करना ही करना है, लेकिन दोनों को भी रीड राइट करना है. तो इज इट नॉट देन देयर विल बी एन प्रॉब्लम? There will be. देयर विल बी एन प्रॉब्लम कि एक रीड करने के पहले दूसरे ने कुछ लिख दिया उस पे, तो द बंदा, द वन हु इज ट्राइंग टू रीड द ओरिजिनल वैल्यू विल नेवर कम अक्रॉस द ओरिजिनल वैल्यू, विल कम अक्रॉस द मॉडिफाइड वैल्यू. गॉट द पॉइंट? Yes, sir. तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं अगर, और उसके लिए तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन की लॉक का कंसेप्ट है कि एक थ्रेड अंदर घुस गया तो बाकी दूसरा जो थ्रेड आएगा रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, तो उसको विल बी केप्ट ऑन होल्ड. यस और नो? और फिर वो जो अंदर जा चुका है, जो एक्सेस जिसने गेन करके रखा है, उसका काम होने के बाद में दूसरा वो बाहर आएगा तो दूसरे को परमिशन दी जाएगी. ये जो कंसेप्ट है, इट इज वेरी क्लोज टू अ कॉन्करेंट कंट्रोल. लेकिन वो अगर वैसा कंट्रोल नहीं रखा तो दिक्कतें आने की चांसेस है. एंड देन दोज प्रॉब्लम्स, एनोमलीज इज नथिंग बट एबनॉर्मल सिचुएशन. ओके, Yes. जो भी हाँ एबनॉर्मलिटीज होते हैं उसको एनोमलीज कहा जाता है, दिक्कतें हैं. तो कॉन्करेंट एक्सेस करने के लिए जब कोशिश हुई फाइल प्रोसेसिंग में, तो they used to come across all such anomalies and abnormalities. So and they regarded and they labeled this as one of the potential drawback, and they call it as an concurrent access anomalies. Are you okay till this point? Yes, sir. And then there is something called as a security related issues. And in fact, in today's time, I believe your generation is well versed with the importance of security, be it information network security, operation level security, data security, because all the transactions now basically they are happening in online mode, and less of physical transaction and exchange. So security plays very crucial role. And in those days also, security used to be playing a role. And in those days, सिक्योरिटी का मतलब ऐसा हुआ करता था कि जो भी बंदे हैं तो उनका ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, ऐसे दो चीज होते हैं. ओके, सो मेनली वी टॉक अबाउट ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन. ऑथराइजेशन का मतलब क्या है? द पर्सन इज गिवन एन ऑथोरिटी टू ऑपरेट. यस और नो? फ्रेंड्स, Yes, sir. आणि ऑथेंटिसिटी म्हणजे काय? यू नीड टू प्रूव्ह दॅट ओके यू आर द वन हु इज ट्राइंग टू. यस और नो? Yes. और एक सिंपल तरीका बताओ, ये कैसा हुआ करता था? Papers. यस, हाँ, मीन्स काइंड ऑफ, अगर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो एन्क्रिप्शन वगैरह हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे अभी. बट देन इज इट नॉट, इट इज गिवन you are provided with ID and password, Yes. and that serves your purpose. And authorization का मतलब है कि what all rights you have, means you are authenticated, you are a user of the system,
लेकिन it doesn't mean that every user will get all the abilities and all the privileges. Depending upon the role you are playing, कि किसी बंदे को बोला जाएगा तेरा privilege जो है ना, तो you are only entitled to perform read operation. दूसरे को बोला जाएगा कि you are entitled to perform read and write. तीसरे को बोला जाएगा कि you can wipe the entire contents. This responsibility is also lying with you. तो अलग अलग authorities है, authorizations. Yes or no? Yes. तो ये जो privileges है वो सदा सेम रहेंगे या चेंज होने के चांसेस भी होते हैं? चेंजेस होने के चांसेस। और चेंजेस अगर होने के चांसेस है तो ये सेम सिनेरियो कि ये अगर फाइल में अपना प्रोग्राम में लिखना है तो प्रोबेबली यू कैन थिंक ऑफ वेरी क्लोज टू इफ एल्स. इफ id is matching with this, so the person is allowed to do this kind of an operation. और वो चेंज होते हैं तो you have to basically have changes happening in the code itself, which is not good. So there used to be some problems related with security, and they have labeled this as an security problems. So these are a few potential drawbacks of the traditional file processing system. And sometimes, as I said, they keep asking the questions on this. I want you to just again just look at this. So data redundancy की बात चली हमारी कि एक से ज्यादा स्टोरेज, एक वही डेटा अगर अलग अलग जगह उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिकॉर्ड करते हैं तो रिडंडेंसी का कॉन्सिक्वेंसेस इनकंसिस्टेंसी. अगर सेम पीस ऑफ डेटा if is not matching at all, if it is at different places, recorded at different places in different files, that leads to an inconsistency. Very serious issue. Difficulty in accessing the data. कुछ spur of the moment queries आती है, एकदम से आ गई query, ये सोचा ही नहीं था यार, spur of the moment है, आ गई एकदम से. तो ऐसे queries को handle करना difficult जाता था उस क्योंकि उनको anticipate ही किया नहीं गया था. डेटा आइसोलेशन की बात हो रही है नए एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से कि नया एप्लीकेशन डेवलप करना है, उसको जो डेटा चाहिए वो दूसरे फाइल में दिख रहा है लेकिन उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में ये नए एप्लीकेशन को चाहिए, तो है लेकिन कुछ काम का नहीं है, तो अपीयर्स टू बी आइसोलेटेड. देन इंटीग्रिटी के बारे में बात की, डिग्री ऑफ करेक्टनेस के बारे में, ऑटोमिसिटी के बारे में बात की. एक तो पूरा होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ऐसा वाला इफेक्ट चाहिए. कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज के बारे में मैंने कहा कि आपको अगर बेनिफिट लेना है तो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन के लिए जाइए. मल्टीपल प्रोसेसर है तो सब प्रोसेसर्स को ऑन रखो सदा के लिए, तो यूटिलाइजेशन भी ज्यादा अच्छा रहेगा और टाइम भी कम लगेगा, तो परफॉर्मेंस भी एनहांस होगा. लेकिन ये कहने के वैसा वो आसान नहीं है, नॉट एज इजी एज वी से. देयर आर सम अदर कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच मे लीड टू अ प्रॉब्लम. So you need to be careful. Again, file processing system was not equipped with this support to handle such problems. So we have labeled this as an concurrent access anomalies wala problem. And finally, we also talk about security problems. So ये एक nutshell में ये अपना discussion रहा. If you have any questions, please let me know. Till this point. No, sir. So my dear friends, कभी भी ये drawbacks को देखेंगे तो we can say that कि probably these are the drawbacks which has prompted the development of DBMS. So we can always say like that. So I can say that probably these drawbacks, potential drawbacks of file processing system has prompted the development of system
DBMS, database management system. Now coming to database management system, now we are pitching this concept. Database का मतलब database is nothing but a collection. Okay, it's a collection of interrelated data. Interrelated इसलिए कहा जाता है क्योंकि just collecting a data for the sake of collecting it doesn't make any sense. अगर मैं कोई बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैं डिपार्टमेंट के लिए एक डेटाबेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली आई शुड थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोविजन टू रिकॉर्ड द डेटा व्हिच इज रेलेवेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट पर्सपेक्टिव. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो इसलिए देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेइंग दैट database is a collection of related data, or many a times we prefer to call this as interrelated data. कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए भाई, and it represents some aspect of a real world. तो ये पूरा जो दुनिया है उसमें का जो छोटा हिस्सा है जिसके लिए ये डेटाबेस, हम लोग डेटाबेस की बात कर रहे हैं, उसको रियल वर्ल्ड कहा जाता है, सम एस्पेक्ट ऑफ रियल वर्ल्ड, और कभी कभी हम लोग इसको मिनी वर्ल्ड भी कहते हैं. तो इसका मतलब है कि आपको किसने कहा कि ये एक बिजनेस एंटिटी है, और लेट अस assume that this is basically okay company who is into the manufacturing of whatever the vehicles, and you are supposed to design the database. तो obviously वो जो कंपनी है जिसके लिए आप सोच रहे हो कि क्या क्या डालू यार, क्या क्या प्रोविजन करके रखूं, सो फॉर बी टू रिकॉर्ड द डेटा, तो आपके लिए मिनी वर्ल्ड, आपका पूरा फोकस वो कंपनी पे, तो उसको मिनी वर्ल्ड कहा जाता है. व्हाट द पॉइंट? Yes, sir. And then just having a huge repository, storage, collection of interrelated data doesn't makes any sense as long as you are also not equipped with a system which claims that I will take care of managing, looking after the management of this database. So that is where the DBMS comes into the picture. And a DBMS is a collection of programs that it is a software system that enables user to organize, decide upon how to organize the data, then record the data, and then also allows the user to retrieve data from the database. ये एक definition हुई. The other way of expressing the same thing is a general purpose software system that facilitates the process of defining, constructing, manipulating, and sharing the database among various users and applications. तो defining का मतलब है ये जो 4 terms की बात हो रही है ना, defining, constructing, manipulating and sharing. ओके, तो डिफाइनिंग का मतलब है कि आप ढांचा तैयार कर रहे हो. यू आर डिसाइडिंग बेसिकली ओके द फॉर्मेट, यू आर डिसाइडिंग अपॉन द वे द डेटा शुड गेट ऑर्गेनाइज्ड. गॉट द पॉइंट? Yes, sir. मैंने कहा अगर आपसे कि एक टेबल बनाइए मीन्स ड्रॉ कीजिए टेबल, और पर्पस रहा कि हमें स्टूडेंट का डेटा वो टेबल के अंदर लिखना है, मैनुअल वर्क लिखना है. तो आप टेबल कैसा बनाओगे बताइए? Number, serial number है. हाँ, मीन्स अभी तक मैंने आपको सीरियल नंबर तो छोड़ो 1 2 3 4 ही रहेगा, लेकिन मैंने रोल नंबर के बारे में भी कुछ बताया नहीं आपको. I am still not commenting on what data needs to be recorded. I am just saying that okay, student data. So you are deciding upon the format ढांचा कि पहला कॉलम हम लोग सीरियल नंबर, दूसरा रोल नंबर, तीसरा उसका नाम रिकॉर्ड करेंगे, फलाना धमाका मार्क्स, ये सुनो. तो अभी तक you still have not started putting the values, but you have decided, you have a big picture of how the data should get organized. Got the point? Yes, sir. So that actually is a definition part. Defining basically looks after that. Got the point?
Now once Yes. you have done that, then constructing का मतलब है populating the table या populating the database. This is an attempt to populate, means fill up, is filling up, means start putting the values. Got the point? Yes, sir. Defining का मतलब है क्या है? ऊपर Format. make the Format. format. हाँ हाँ, तो ये हो गया फिलअप. अच्छा, फिलअप होने के बाद में एक बार डाल दिया तो वैसे के वैसा रहेगा. ओके, एंड डेड एंड नो चेंजेस, ऐसा कभी नहीं होता है. तो यू ऑब्वियसली एक्सपेक्ट सिस्टम टू प्रोवाइड यू with the ability to perform the manipulation. As and when the need arises, you may realize, अरे यार, this data now has lost its relevance. इसको निकाल के फेंकते, चलो डिलीशन. आपको लगेगा नया चीज आ गया, चलो नया रिकॉर्ड डालते, तो इंसर्शन. आपको लग रहा है ये जो मैंने डाल के रखा था वो गलत है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अपडेट. So this, in fact, okay, these are the abilities to perform the manipulation. Got the point? Yes, sir. And not only this, you also expect a system to offer a shareable environment. इसका मतलब है कि जो भी मेरे डेटाबेस में मैं डाल रहा हूं, सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए बना नहीं है. उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग कितने भी एप्लीकेशंस आप डेवलप करोगे, तो सबके लिए शेयरेबल एनवायरनमेंट रहेगा. सो दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन DBMS. सो कैन वी से दैट, applying the common sense, if someone asks us what is database management system, so can we say that it is a software system which is supposed to look after the management related issues of database? Yes or no? Yes, sir. You always can, okay, just devise this definition if someone asks you. And to be very precise, then you can talk about the process of defining, constructing, manipulating, and sharing. Share. Yeah. So this is just starting with the definition. DBMS, very important. And before we proceed, obviously, you can tribute to all the role players, a bit of historical perspective, and all these people deserves at least, okay, this much of an time we are spending. So you please read out these names: Charles Bachman, then E.F. Cord, and responsible for relational database model. And in fact, okay, majority of a chunk of our curriculum obviously will be revolving around this relational database model. And after almost 50 years also, relational database model basically is one of the major role player. It has obviously, okay, undergone some changes and some enhancement, but then it is still playing a very important role. Then entity relationship, we Chalo, coming back, okay, and well and good. So I was telling you that, okay, what are the typical features? I think the screen is visible now. Yes, sir. हाँ, तो मैंने ये कहना था कि भाई अभी ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि भाई ये DBMS is capable of addressing all those potential drawbacks. So one of the important characteristic is that we say database is always an integrated and shared environment. इंटीग्रेटेड इन द सेंस कि आप जो डेटा यहाँ रिकॉर्ड करते हो रिपोजिटरी में, डेटाबेस में, it is regarded as an integrated system, so that you don't have to keep replicating it for every new application, and it is shared environment. Once a data is recorded, so it is made accessible to all the applications belonging and pertaining to the same organization. So this obviously, okay, happens because of the introduction of one additional layer in between. If you compare, this is an additional layer which comes in form of an DBMS. अभी earlier scenario अगर आप देखोगे, जो डायग्राम मैंने बताया था, इसमें आपको दिखाई देगा कि डायरेक्टली क्या हो रहा है कि ये जो बंदे रजिस्टर ऑफिस के जो बंदे जो रजिस्ट्रार है और उसके वहां जो ऑफिशियल स्टाफ काम कर रहा है, दे विल नाउ स्टार्ट रिलाइंग ऑन एप्लीकेशन जो डेवलप हो गया, प्रोग्राम एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन डायरेक्टली फाइल्स के साथ, डेटा के साथ खेल रहा है, एक्सेस कर रहा है. और अभी DBMS एनवायरनमेंट में अगर आप देखते हो, you will find that there is one more layer which is introduced, and that is DBMS. तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली
डेटा के साथ नहीं खेलेगा. It will basically okay first interact with DBMS, and DBMS on behalf will provide the services. Are you getting this? At least from diagram. Yes, sir. And there is one beauty of database, which comes in form of a data dictionary. Data dictionary ये जो है sometimes is also called as system catalog. And if someone asks us, at least at the beginning, we'll get into the details of this. What I said, it records, it is used to record Metadata. and metadata का मतलब है data about data. Now, if we are saying कि स्टूडेंट का डेटा एक टेबल में रिकॉर्ड करेंगे, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो स्टूडेंट का रोल नंबर 123, ये स्टूडेंट डेटा हो गया. उसका नाम वैभव, ये स्टूडेंट का डेटा हो गया. उसका एड्रेस दादर ईस्ट शिवाजी पार्क, ये उसका डेटा हो गया. उसका एज 19, ये उसका डेटा हो गया. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. So this data is supposed to get recorded in the database. Now the question is, what is metadata? तो metadata का मतलब ये है कि आप स्टूडेंट का डेटा अगर टेबल के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो टेबल का नाम क्या है. Got the point? Yes. टेबल का पहला कॉलम जो है सीरियल नंबर, वो सीरियल नंबर का डेटा टाइप क्या है? तो आप कहोगे सर इंटीजर तो है 1 2 3 4. अच्छा ठीक है. फिर बाद में रोल नंबर जो है सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम का नाम क्या है? टेबल के अंदर पहला टेबल का नाम, फिर सीरियल नंबर, फिर रोल नंबर. तो रोल नंबर ये कॉलम का हेडिंग हो गया, उसको एट्रीब्यूट कहा जाता है, बाद में कहूंगा इसके बारे में. लेकिन कॉलम हेडिंग रोल नंबर हो गया. उसका डेटा टाइप क्या रहेगा? वहां जो वैल्यूज आने वाले उनका डेटा टाइप क्या होने वाला है? वो इंटीजर रहेगा, फ्लोट रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, क्या रहेगा? ये सारी जो जानकारी है, स्ट्रिंग रह सकता है, बरोबर है. ये सारी जो जानकारी है, इंटीजर भी कह सकते हैं, ये सारी जानकारी डेटा डिक्शनरी में रिकॉर्ड की जाती है. गॉट द पॉइंट? Yes, sir. इज इट डेटा या इट इज डेटा अबाउट डेटा? Data about it. Data about data. Then if we are also recording the end semester exam का marks, तो उसका डेटा टाइप क्या है? आप कहोगे इंटीजर है. Then whether there are some integrity constraints imposed. Integrity constraint का मतलब है वो कॉलम के अंदर जो भी वैल्यूज को डाला जाएगा उसका कुछ लोअर लिमिट सेट किया गया है क्या, या अपर लिमिट सेट किया गया है क्या, या दोनों भी लिमिट्स इंपोज किए गए हैं क्या. ये जानकारी जो है ना आपको डेटा डिक्शनरी में मिलेगी. गॉट द पॉइंट? Yes, sir. फिर बाद में वैलिड ऑथराइज्ड यूजर्स कौन कौन है, ये जानकारी डेटा डिक्शनरी में. उनके प्रिविलेजेस क्या है, जानकारी डेटा डिक्शनरी में. तो इट इज डेटा अबाउट डेटा. इट इज यूज्ड बेसिकली ओके टू रिकॉर्ड व्हाट आई सेड, डेटा अबाउट डेटा. और कभी भी ना फ्लो ऐसा होता है माय डियर फ्रेंड्स कि जैसा एक रजिस्ट्रार जो पोजीशन है, एक रजिस्ट्रार ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑब्वियसली विल बी रिलाइंग ऑन द एप्लीकेशन. बरोबर है? एक प्रोग्राम डेवलप करके डेटाबेस कनेक्टिविटी. तो ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू वो जो रिक्वेस्ट करेगा, पहले दिस रिक्वेस्ट विल बी इंटरसेप्टेड बाय डीबीएमएस. वो पहले डीबीएमएस पकड़ता है, ये अच्छा ये रिक्वेस्ट पहले डीबीएमएस को जाती है रिक्वेस्ट. फिर डीबीएमएस डिसाइड करता है कि रिक्वेस्ट ऑथराइज यूजर से आ रही है या नहीं आ रही है. व्हाट द पॉइंट? फिर अगर आ रही है
तो फिर वो रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे डेटा डिक्शनरी में झांक के देखना पड़ेगा, ये बंदा जो रिक्वेस्ट कर रहा है ऑथोराइज यूजर है, ये बंदा जो ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा है उसको अलाउड है, उसका प्रिविलेज है, उसको ये राइट दिया गया है, ये जो बंदा ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है वो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को इधर उधर कुछ वायलेट नहीं कर रहा है। ये सारी चीज कब पता चलेगी डीबीएमएस में, डीबीएमएस को आफ्टर गेटिंग इनसाइड व्हाट, डेटा डिक्शनरी। तो मींस पहले डीबीएमएस जनरली डेटा डिक्शनरी के अंदर झांक के वगैरह, दे आर ऑब्वियसली नॉन टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज, बट राइट नाउ एट द बिगिनिंग आई एम जस्ट यूजिंग इट फॉर यू एंड मी टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। पहले डीबीएमएस पहले वो डेटा डिक्शनरी को रेफर करता है, हाँ ये सब बरोबर, और फिर चल के अपने डेटाबेस में जाके जो भी डेटा पड़ा है वो फेच करके वो जहां से रिक्वेस्ट आई थी उसको भेजता है। तो दैट इज हाउ द रिक्वेस्ट गेट्स सेटिस्फाइड। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. So what kind of an environment, tell me? Integrated and Shared. so the entire data is regarded as an integrated unit and it is shareable among any number of applications pertaining to that organization. And there is one more change you might have noticed. Now you have a user category. Okay, you have a user category and which can access this data directly without relying on the application. This is by using query language, a language support by DBMS. That is per se, for example, SQL. What the point? Yes, sir. Now the question is, I mean, now you keep telling me data redundancy, how this problem is addressed by database system. Only one time the data is. Because it is integrated and shared environment. Yeah. So you don't have to Duplicate. keep replicating and duplicating for every new application. एक बार किया तो then DBMS will fetch that for any number of applications. Shareable environment, right? Yes, sir. Then if the redundancy is controlled, तो obviously okay, जो second problem था क्या था, inconsistency, वो भी नहीं आएगा। Yes. तीसरा प्रॉब्लम डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। तो डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा का मतलब मैंने क्या बताया था, लेट अस गो टू दैट पॉइंट, तो आपको इमीडिएटली रिकलेक्ट कर पाओगे आप। डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, ये क्या कहा था मैंने? Queries. तो या तो इसको सोप्या भाषेमध्ये, इजी लैंग्वेज में क्या कहेंगे? Random code. रैंडम आ गई यार क्वेरी, इसको तो एंटिसिपेट ही नहीं किया था, तो वहां वो डिफिकल्ट था। लेकिन यहाँ नाउ डीबीएमएस, हाउ डीबीएमएस एड्रेसेस इट बाय यूजिंग द लैंग्वेज सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट? Language support. वो बोलता है, डीबीएमएस बोलता है कि ये अगर क्वेरी एंटिसिपेट नहीं की गई थी जब एप्लीकेशंस को डेवलप किया गया था, बट देन स्टिल आई एम ऑफरिंग यू अ लैंग्वेज फैसिलिटी, यू सिंपली नीड टू पंच a very simple statement, very natural, select this and that, select star from this table, so then I will serve and I will fetch all those details. Got the point? Yes, sir. So the sophisticated users, those who are well versed with SQL, they can easily handle this situation of random queries. Isolation का सवाल ही नहीं है, data is no longer isolated because it is shareable environment. If Yes, the data is there and if you are developing a new application, so boss, for this new application is the data is available, you may say अरे यार ये नए application को अलग format में चाहिए, तो leave that responsibility to DBMS. DBMS says तुझे कौन से format में चाहिए बता, मैं वैसा present project करता हूँ. Got the point? Yes, sir. हाँ, so that problem is properly addressed. Then बात चली थी हमारी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट पे, इंटीग्रिटी रिलेटेड प्रॉब्लम। अभी इंटीग्रिटी रिलेटेड प्रॉब्लम जो लोअर लिमिट, अपर लिमिट, प्रोग्राम के अंदर कोड करने की जरूरत नहीं है, हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है, वो सारे डिटेल्स कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं बताइए? कहाँ? Database.
डेटा डिक्शनरी मध्ये कुठे? तो Data अगर कल चल के ये रेंज चेंज होती है तो आपको चेंज कहाँ करना पड़ेगा? metadata. डेटा डिक्शनरी में ही चेंज करना पड़ेगा. तुम्हारा एप्लीकेशन प्रोग्राम बिल्कुल हाथ नहीं लगाने का, उसको जैसा वैसा चलेगा. So that is basically how the integrity related problems are taken care of. Then Automaticity और concurrency की बात चली. तो my dear friends, Automaticity के लिए ना, there is a separate topic happening on this issue, but right now what I can tell you, DBMS is equipped with 2 software components, okay, and one component is called as कौन सा component? I think my handwriting is Recovery manager. manager. तो रिकवरी मैनेजर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, उसके अंदर ऑल्गोरिदम्स होते हैं. वो इसलिए बना है कि अगर चल के ट्रांजैक्शन हो रहा है और बीच में ही कुछ गड़बड़ आ गई, तो वो देखता है कि ट्रांजैक्शन पूरा हो चुका था या नहीं हो चुका था. अगर नहीं हो चुका है तो खुद अंडू ऑपरेशन को इनिशिएट कर देता है. तो अंडू ऑपरेशन को इनिशिएट करने के बाद में क्या स्टेटस मिलेगा हमें? ऑल का मिलेगा या नन का मिलेगा? नन का मिलेगा. तो ये यूजर को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो इंटरनली डीबीएमएस हैंडल्स दिस इशू. एंड कॉन्करेंसी के लिए ना, जैसा मैंने कहा था कि अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को वही या थ्रेड्स के बारे में बात करेंगे, अगर मल्टीपल थ्रेड्स को सेम कॉमन रिसोर्स को एक्सेस करना है तो लॉकिंग मैकेनिज्म चाहिए. तो लॉकिंग मैकेनिज्म के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉक, और कभी कभी इसको will you please read out this? तो मैं वापस लिखता हूं. Concurrency. कंट्रोल. हाँ, कॉन्करेंसी कंट्रोल हे ब्रैकेट मध्ये टाकलाय. उसको लॉक मैनेजर भी कहा जाता है. तो किसको कब लॉक करने का और कब लॉक निकालने का, कब लॉक करने का, कब अनलॉक करने का, और किसको परमिशन देने की, ये लॉक मैनेजर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट तय करता है. तो दैट इज हाउ those 2 problems obviously, okay, they are addressed by DBMS. Got the point? Yes, sir. And finally रही बात सिक्योरिटी की, तो DBMS on its own offers security feature, not only the user ID and password that by default is there, but then also support a grant and revoke kind of an feature by using which the responsible authority, database administrator, DBA, we call it as a DBA, very responsible position as far as a database domain is concerned. So your DBA can grant the rights, privileges, and as and when required can take it back. So these additional features basically, okay, they cater to the security related issues, and that is how the database system handles all these problems. Got the point? Yes, sir. So any question from your side? It is almost, I think, 1.5 hours we already have spent together, this being a very first session, because my experience is क्या होता माहिती है कि next second session में कोई new addition हो जाती है, तो अगर मैं एक साथ आगे लेके जाऊंगा सिलेबस तो उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए. यही उसके पीछे का एक ये है, रीजन है. तो I wish today I will restrict myself to this point only. But then now the platform and session is open for your questions. If you have any particular questions, you can ask me before we, okay, just conclude with the today's session. Yes, sir. Are you comfortable with म्हणजे मी जसं प्रयत्न करतोय समजून सांगायचं, आणि are you getting tuned Yes. gradually, slowly? Are you getting Yes, tuned with? Yes, sir. Yes. And कधी वाटलं ना तर you always enjoy the liberty, because it is in between you and me, की सांगायचं की सर स्लो जा, सर ऐसा ऑलवेज वो फीडबैक, Oh, बाद sir. में फीडबैक वगैरह लेके जाता है, लेकिन ड्यूरिंग द सेशन वाला जो फीडबैक होता है या आपके डिफिकल्टीज, कीप डूइंग दैट माय डियर फ्रेंड्स. So Yes. block manager.
लॉक मैनेजर एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, तो वो तय करता है कि अगर एक से ज्यादा रिक्वेस्ट आती है अलग अलग जगह से एक ही रिसोर्स को एक्सेस, स्टूडेंट रिकॉर्ड को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट आ गई अलग अलग के जगह से, तो और राइट भी ऑपरेशन करना है, सिर्फ रीड नहीं, रीड भी करना है और राइट भी करना है, चेंजेस भी लाने हैं, तो किसको मैं अलाउ करूं और किसको थोड़ा होल्ड पे रखूं, ये तय करने का काम लॉक मैनेजर का होता है। एंड दैट इज हाउ द कॉन्करेंसी एनोमलीज आर एड्रेस्ड। जो हमने कहा था ना कि ये दिक्कतें आ सकती है कि भाई कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन बेनिफिट के साथ तो आता ही आता है, परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छा होता है, it comes along with the problems also. So to cater to this problem, ये problems को हटाने का काम DBMS करता है by using the inbuilt component which is called as a lock manager. It's not a person, it is an internal component of a DBMS. समझा क्या? Yes, sir. जैसा थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन में होता है ना, जावा खुद देखता है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन में, आपने सिंक्रोनाइज मेथड लिख दिया तो इसका मतलब द मेथड इज अलाउड टू गेट executed only by one thread at a time. ओ स्पिरिट में लो इसको। या तो ऐसा सोचो कि यार ऐसा सोचो कि एक क्लासरूम है और ना वो क्लासरूम में बच्चे बैठे ईगरली वेटिंग फॉर प्रोफेसर टू कम एंड डिलीवर द टॉक लेक्चर। दिस इज अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आई नो, बट देन ऐसा सोचो, सोचने में क्या जाता है, और यहाँ दो प्रोफेसर से, दोनों को भी अंदर जाके अपना लेक्चर ठोकना है वहां, तो दोनों एक साथ घुसेंगे अंदर, कॉमन रिसोर्स तो क्लासरूम कॉमन है, बच्चे भी कॉमन है, और दोनों भी शुरू करेंगे अपना काम, तो दैट विल लीड टू एन कियोस। तो आप ऐसा सोचो कि एक लॉकिंग, एक बंदे को बोला गया, वहां बंदा मैं कह रहा हूं कि ये इंटरनली होता है डीबीएमएस में, उसको बोला गया एक प्रोफेसर अंदर गया ना तो लॉक लगा देने का, फिर दूसरा कोशिश भी करेगा तो उसको अंदर जाने नहीं मिलेगा, फिर वो लोग लेक्चर ठोक के आया, बाहर निकला तो लॉक खोल दे, फिर दूसरे को परमिट कर। तो दिस इज बेसिकली ओके रिक्वायर्ड टू अवॉइड ऑल दैट कियोस एंड एनोमलीज एंड डिफिकल्टीज। अभी दिस इज हाउ logically speaking lock manager works. What the point? Yes, sir. Yes. Any questions? So actually, I had a doubt. Like, as in, how will you give us the note? Normally, my dear friends, not normally. What I do is that, कि number one, you always will get printed notes from अपना विद्यालंकार. Yes. 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 नंबर टू, ये जो अपना बातचीत होता है ना, ये अभी मेरा जो प्रेजेंटेशन है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आपने सुना भी है, देखा भी है, तो दिस इज बेस्ट व्हाट आई कैन शेयर विथ यू डायरेक्टली। तो मैं इसका एक पीडीएफ बनाता हूँ और मैं नेक्स्ट सेशन में इसको शेयर कर देता हूँ। So, but if you are giving us in writing, that would be more beneficial for us. Like, as we'll recall the topics. Right, really writing in the sense, please let me know. Like as in notes, like dictate. Yeah. My dear friends, नहीं ते करना। See, जब जरूरत पड़ेगी ना, मुझे पता है ना क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो सब आपको मिलेगा, डोंट वरी। मैं लिखवाऊंगा अभी आपसे, डोंट वरी। लेकिन ये बैलेंसिंग क्यों करना पड़ता है? कितने आवर्स का अपना बैच है बताइए? What is duration? 30 आवर्स। तो ये 30 आवर्स को मैनेज करने का काम भी मेरा एक स्किल रहेगा ना, कि जो जहां मुझे डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है, जो मुझे पता है कि विद कॉन्फिडेंस इन यू पीपल की अरे बघितल्यावर ये देखते बराबर ये लिख पाएंगे, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम्स, तो जहां जरूरत नहीं है वहां आई विल नॉट स्पेंड अ टाइम डूइंग द डिक्टेशन एंड स्पेंडिंग टू मच ऑफ अ टाइम, डोंट वरी। और जहां जरूरत है, व्हाट एवर इज इंपॉर्टेंट, we will be spending worth of a time on those issues. So please don't be worried on those fronts. और आपको इसके ऊपर चाहिए तो मेरे भी हैंड रिटन नोट्स जो भी है मेरे पास, तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। Yes, sir, that would be great. Yes dear, don't worry. Any other questions? Sir. हाँ. Which book we have to refer?
Right now, I will say that there are two books which I can recommend. अभी वैसा अगर देखा जाए, and it's a good question, and I appreciate you are asking me about this. वैसा देखा जाए तो even if you just rely from examination point of view on commenting, I need to be very careful on this. Okay, so from examination perspective, I will be covering everything and everything. Don't worry. And in fact, okay, nowadays the kind of an paper format is there. The first 20 marks basically they are MCQs. So हम लोग MCQ भी मैं provide करते रहूंगा उसका आंसर कीज के साथ. So रही बात कौन से बुक्स को रेफर करना चाहिए, तो one basically is a database system by Korth. I'm just telling you they are very popular books. So I will just write down the name of the author and you just Google search and you will get. And second is by The Fundamentals of Database System by Nawathe, Ilmasri Nawathe, and Silver Chart Korth. So these are the two books and you can go for any of this. This is from your longer run perspective, from knowledge perspective and so on. Not from very much examination perspective, but even from examination perspective, they will be helpful because the type of language generally कैसा होता है कि reference book रही तो उसका language थोड़ा difficult होता है, वैसा भी नहीं है. The beauty of this is it's basically we should appreciate क्योंकि it throws light on every minute details and the language also is very simple. So just you start reading and you will find very interesting. So these are the two books what I can recommend to you people. Okay. Sir, so apart from the Vidyalanga books, we have to refer these two books, right? Means for out of your interest and you believe not only the examination but you need to know much about the other minute details also. So these two books. If we from examination perspective, you just can rely on the notes what we are providing from our side, Vidyananda. Okay, so Anything apart from this? No, sir. So ठीक है, that's great. Yeah, talking to you people. Thank you very much for the patient listening, and hope next time will make the sessions more interesting, and more will be the interaction, and more will be the queries coming from your side. Sir, do we have program in this subject? You have the lab component here, and you need to do all these activities. You need to create the database, then you need to populate the database, then you need to fire the queries by using an SQL. So we'll be discussing all those, but then always giving the demonstration is not possible because moment I get into that mode, 30 hours will not be sufficient, and that will be at the cost of very important topics. So anyhow, you'll be doing these lab sessions in your respective institutes, and the way the explanation goes, because see, I'm teaching this subject from quite a long, तो मेरे स्टूडेंट बोलते सर आप जो लिख के पढ़ाते हो ना उससे पूरा ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलता है. And you tell me, and you'll be sharing your experience with me anyhow. You'll be doing the lab sessions for this. Don't worry.